Hello, Assalamu alaikum, good morning and welcome to the Pavilion. I'm Fakhr और आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap application, and we are bringing you continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. And today we're heading back to Hobart for Group B matches. But before we start that, let's take a look at the points table because two more teams are going to qualify to go into the Super 12. सूरत हाल आपके सामने है। ग्रुप बी में इस वक्त यूं है कि स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड सबके दो पॉइंट्स हैं और अब आज जिसके 4 पॉइंट्स होंगे, चार पॉइंट्स लेके टीमें जो है वो आगे जाएंगी। लेकिन क्वालिफिकेशन की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और उस पर भी हम ज़रा नज़र डाल लेते हैं। अगर तो वेस्ट इंडीज अपना मैच जीती है तो दे आर थ्रू, अगर आयरलैंड अपना मैच जीतते हैं तो दे आर थ्रू। So whichever team actually wins goes on. This is how it is. If they win, they go. Ireland wins, they go. If they lose, they're out. If Ireland loses, they're out. मगर अगर आज बारिश हो जाती है तो सूरत हाल कुछ इस तरीके से बनेगी कि बारिश के से उसमें वेस्ट इंडीज़ का नेट रन रेट चूँकि बेहतर है इसलिए वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई कर जाएगी और अगर दोनों गेम्स जो हैं वो वॉश आउट हो गई तो स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे जाएंगे अगले राउंड में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि सूरत हाल कैसी बनती है। And with that, let me bring in my legends, icons, panelists, and the people who made Pakistan proud over the years. I've got with me the young, the dashing Shoaib Malik, Mr. Dependable, Misbah-ul-Haq, the super energetic, fresh, toe-crushing Waqar Younis this morning. And the legend of all legends, the Sultan of Swing, Wasim Akram. Assalamu alaikum and good morning, gentlemen. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Good morning. Outstanding. Let's take a look at the two games that we have set up. Here are the match items on your screen now. The first match from Hobart, it is Ireland versus West Indies. Both teams are eyeing that spot. Whoever wins goes through, whoever loses goes home. And the second game is Scotland versus Zimbabwe. And Scotland versus Zimbabwe सूरत हाल ऐसे कि अगर आज पूरा दिन बारिश होती रही तो ये दोनों टीमें जो हैं वो अगले राउंड में चली जाएंगी. So this is how it is all loaded. Otherwise we will find out. Well, I mean if it rains they both go in. Otherwise one of them will with 4 points. तो ये सूरत हाल है दोस्तों. And Hobart, we are back in Hobart. Shoaib Malik, you are very familiar with this ground. So tell us how does it change with the passage of time? Because we are now 1 week into the ICC Men's T20 World Cup. We've had matches on these wickets. कोई सूरत हाल, कोई चीज़ें चेंज होंगी, मुख्तलिफ होगा और आज फोरकास्ट है थोड़ी सी बारिश की, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो है 172 अगर आप पहले बैटिंग करते हैं और आई गेस प्रेशर गेम में आपको पहले टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए क्योंकि वंस यू हैव रन्स ऑन द बोर्ड एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर तो बारिश की फोरकास्ट है देन यूजुअली यू बैट सेकंड बिकॉज यू हैव अ क्लियर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू और फिर आप अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान करते हैं। लेकिन ये है कि फियरलेस क्रिकेट खेलें, कैसी भी कंडीशंस हैं जस्ट गो आउट देयर एंड गिव योर बेस्ट शॉट. Okay, all right. We're going to excuse that. Waqar is going to go off set momentarily. And let me come to you, Wasim, now. West Indies, we've been talking about it. Good to see that the West Indies pulled in a victory. And now they are all set to probably walk into the next round. How do you see them now shaping up with that one victory, momentum coming their way, a little bit of confidence, a little bit of unity? वेस्ट इंडीज़ पे ठीक ठाक प्रेशर होगा आज के मैच का बिकॉज इट्स डू और डाई. इफ दे लूज दे गो होम एंड वेस्ट इंडीज़ इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टीम टू वॉच. वी नो हाउ स्पेशली इन दिस फॉर्मेट क्या प्लानिंग है जो सो फार अभी जो उनका मेन बॉलर नया जिससे ओवर कराते हैं 6 ओवरों में, काइल मायर्स हिज नेम इज़, ही हैजंट गॉट अ विकेट सिंस हैज़ बीन बॉलिंग इन फर्स्ट 6 ओवर्स. उसको एक विकेट ही नहीं है अभी तक और उसको करा रहे हैं जबकि आपके मेन बॉलर होल्डर ले लो, वो दूसरा ले लो जोसेफ ले लो, फिर वो दूसरा भी है एक और मीडियम पेसर, वो उनकी विकेटें भी हैं 6 ओवरों में, उनका रन रेट भी 8 रन ओवर जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई दे गिव द बॉलर एंड आई एम सो अगेंस्ट स्पेशली उन विकेटों पे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में. यू गाइज माइट नॉट एग्री विद मी कि नया बॉल जब आप स्पिनर को देते हो इवन एक ओवर भी
अगले ओवर से स्विंग नहीं होता नेक्स्ट ओवर में, सो वहाँ उन विकेटों पे कम से कम एक ओवर नया बॉल आप अपने फास्ट बॉलर्स कर दें, फिर अगर आना है तो तीसरे ओवर में स्पिनर्स के पास आ जाए। वसीम प्लीज इलैबोरेट, क्या मतलब कि एक ओवर आप स्पिनर को देते हैं तो बॉल स्टॉप स्विंगिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट एंड हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज आई डोंट नो द बॉल इन्होंने चेंज हुए या नहीं हुए। आप देख लें, जब भी कभी स्पिनर पहला ओवर करता है दूसरे ओवर से आपकी सीम स्विंग खत्म हो जाती है। आई डोंट नो, इट्स मोर साइकोलॉजिकल कि रिस्क यूज़ नहीं होती। सो जब अब जैसे शाहीन नया बॉल करता है पहला ओवर वो करता है और उसी में उसको स्विंग, उसी में उसको विकेट मिल जाती है। पर जब स्पिनर करता है, आई सपोज जब गेंद अराउंड द ग्राउंड जाता है तो वो स्विंग उसका पहले ओवर के बाद एक आधी बाउंड्री लग जाए बिल्कुल नहीं होता। रफ तो होता नहीं, लैकर उतर जाता होगा, बट एवर सो नया बॉल उन पिचेस पे ऑस्ट्रेलिया में आप एक ओवर आप अपने मेन फास्ट बॉलर्स को दें जो बाउंस पर थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलना है अर्ली ऑन इनिंग्स में, वो मिल जाए। मायर्स जो है वो अपनी सीपीएल की टीम के लिए अटैक ओपन करते हैं। इज दैट द रीजन कि उनको वहाँ पे किसी किस्म की कोई सक्सेस मिली हुई है जिसको मद्देनजर रखते हुए टीम इज कंसिस्टेंटली बैंकिंग ऑन हिम टू स्टार्ट विद द न्यू बॉल? देखिए स्विंग होता है बॉल, लेकिन रेड बॉल में और वाइट बॉल में फ़र्क है। टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छी बॉलिंग करते हैं वहाँ पे, स्पेशली जब वो ड्यूक के बॉल से बॉल कर रहे थे हमारे अगेंस्ट भी, तो he was a difficult bowler, but white ball cricket is different. Difficult means कि he's a slow medium pacer. अगर थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा है या सीम हो रहा है वो बैट्समैन तो टैकल कर लेते हैं अगर पेस ना हो तो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट्स टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। वाइट बॉल क्रिकेट आपने जैसे बात की कि somehow 2 ओवर से ज़्यादा वैसे ही नहीं ये स्विंग होता बॉल। नॉर्मली डे टाइम पे जब मैच होता है तो बड़ा मुश्किल है, हम वो देख रहे होते थे कि शाहीन का गेंद भी स्विंग हो जाए, समटाइम्स वो भी उस तरीके से नहीं होता, बट बहुत चांसेस हैं कि उसके पहले ओवर में और दूसरे ओवर में, फर्स्ट 2 ओवर्स में आपको वो शेप मिलेगी, उसके बाद बड़ा मुश्किल है। नाइट गेम डिफरेंट है, उसमें लेटर ऑन भी कई दफ़ा आपको स्विंग मिलता है। तो आई थिंक कि इस बॉल के साथ अगर आप सोचते हैं कि मैं मीडियम पेसेस के साथ हम ऊपर से कोई विकेट ले लें, एक्चुअली आप अपने एडवांटेज को डिसएडवांटेज में बदल रहे हैं। यहाँ पे बाउंस है, पेस है, जो बैट्समैन के डिफेंस को बीट कर सकता है बॉलर, उसको आप शुरू में बॉलिंग कराएं ताकि वो अगर सेटल थोड़ा सा टाइम लेना भी चाह रहा है, 150-145 वाला बॉलर आएगा तो उसके डिफेंस को बीट करके आउट करे। अटैकिंग थोड़ा सा माइंडसेट रख के आप किसी को बॉल। अब ये देख लेना, सॉरी ये कायल मायर्स का देख लें, आर्गुएबली इज द वर्स्ट बॉलर फॉर वेस्ट इंडीज। इन द पावर प्ले ही हैज बॉल्ड 12 ओवर्स सो फार फ्रॉम 1 to 6 ऑब्वियसली इन T20 विदाउट टेकिंग अ विकेट एवर। वाओ, that's a strategy। थोड़ा सा ना वसीम भाई मुझे ये लगता है कि वो ऐसी स्पेशली क्रिकेट खेलते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हमें इतना टारगेट कर लो, हम आपको चेस कर लेंगे, हम आपको मारेंगे और उसको चेस कर लेंगे। इसलिए हो सकता है कि वो 6th बॉलर जो है उसको ही फर्स्ट ओवर दे के वो आउट ऑफ द वे कर देते हैं कि यार चलो अगर किसी मेन बॉलर को मार पड़ी तो उससे 3 ओवर करवा लेंगे। हाँ, जो आपका माइंडसेट है, जो आप यहाँ बैठ के जो हम लोगों ने देखा है कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए, तो मोस्टली मैचेस हो रहे हैं 150 के आसपास रन्स बन रहे हैं। उसमें वसीम भाई वाली बात, मिसबा भाई वाली बात बिल्कुल सही है कि आप अटैकिंग ऑप्शन को अप फ्रंट लेके हैं ताकि वो आपको ऊपर से विकेट्स लेके दें। ऑलराइट दोस्तों, आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखर और आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप। And with me in the studios, I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, and Wasim Akram. Waqar, Younis, not feeling a little bright this morning, is taking a little break, and we hope that he joins us soon. And let's get back to the first game that we have, and the first game is Ireland versus West Indies at Hobart. ये याद रहे कि ग्रुप बी है, ये आखिरी क्वालिफाइंग मैचेस हैं। इसके बाद हमारे जो फाइनल सुपर 12s हैं वो हमारे सामने नमूदार होंगे, and we'll be able to get on with the business end of the tournament. So it's the ICC Men's T20 World Cup. Let's get going with the West Indies team. Good news for the West Indies. Johnson Charles, शोएब, पिछले मैच के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 45 रन स्कोर किए, but it was good to see him, you know, coming to the party finally, waking up and joining the World Cup. वैसे वो लेट उठते हैं, अच्छा हमारी तरह ही है वो। लेकिन ये गुड टू सी हिम स्कोरिंग रन्स, और वैसे ही अप फ्रंट जब रन्स बनते हैं तो
वो एडवांटेज होता है, इवन जो मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन आते हैं उनके लिए रिलेटिवली इजी होता है, और ये रन्स बनाते हैं मोस्टली प्लेइंग शॉट्स 4s and 6s, और ये इनका नेचुरल गेम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर एनीथिंग उनके स्लॉट में रिगार्डलेस ऑफ द बाउंड्री साइजेस वो 6 रन ही है या 4 रन है, तो अच्छा साइन है। दूसरा ये है कि जिमी मायर्स जो हैं ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग, और मुझे लगता है कि एवन लुइस को ओपन करनी चाहिए, और पूरन को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि ऊपर के नंबर्स में आए, एटलीस्ट ही कैन प्ले इज नेचुरल गेम, जो कि वो भी स्टोक्स खेलते हैं। और ऑफ कोर्स जैसे वसीम भाई ने कहा कि अगर उनको मैच ये वाला जीतना है तो मेन बॉलर्स को पहले बॉलिंग करनी। और सो फार जो इन्होंने 1-2 मैच खेले हैं वेस्ट इंडीज़ ने, हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में दे स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिनर्स। आई मीन द बेस्ट जॉनसन चार्ल्स एंड अकील हुसैन का स्ट्राइक रेट है 100 का अगेंस्ट स्पिनर्स, एंड बाकियों और एक सिर्फ छक्का मारा इन्होंने स्पिनर को इस सो फार इस वर्ल्ड कप में, हालांकि दे आर फेमस फॉर द बिग सिक्सेस। एंड आई थिंक लाइक शेबी जस्ट सेड कि ये थोड़ा लेट उठते हैं वेस्ट इंडीज़, और अगर ये इस ग्रुप में टॉप करते हैं B1 में, सो दे विल प्रॉब्ली जॉइन पाकिस्तान इंडिया वाला ग्रुप वर्ल्ड कप में, सुपर 12s में। सो दिस इज़ वन ऑफ द साइड्स, वेस्ट इंडीज की साइड वो है कि आप इनके खिलाफ जो मर्जी प्लान कर लो, you don't know which side of the bed they're going to wake up. They probably play exceptional cricket on that particular day, and they probably beat the best team in the world. So इसीलिए ये बहुत dangerous side है. Unpredictability of the West Indies, मिस्टर। बिल्कुल, और अब मेरे ख्याल में इस मैच में इनके पास चांसेस नहीं है इस चीज़ के कि ये आएँ और जिस तरह के इन्होंने पहला मैच खेला है कि ठीक है हम कर लेंगे, पकड़ लेंगे, बिकॉज आज के मैच में अगर थोड़ा सा भी वेस्ट इंडीज़ कहीं पे भी प्रेशर में आई तो देन इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। आयरलैंड कोई प्रेशर नहीं होता, वो आके एंजॉय करेंगे गेम को, अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर उन पे नहीं है, जबकि वेस्ट इंडीज़ के सामने ये है कि हमने क्वालिफाई करना है। ज़ाहिर है आपका नाम होता है एज ए टीम, बड़ी टीम है, दे विल बी अंडर इमेंस प्रेशर। आफ्टर दैट अगर वेस्ट इंडीज़ आ जाती है इसके बाद ये मैच जीत के, then they will become dangerous. Yeah, then they will become dangerous. We've got Johnson Charles right now. Let's listen in. Johnson Charles, two-time World Cup champion alongside me. Johnson, an important win in your last game to stay in the competition. You guys are still in it. How's the mood in the camp? Definitely we have a good mood in the camp. It's one of fight back and one that we had to stay alive. So that win, it really brought some confidence, and then we're just looking, to continue that great mood and to qualify. Yeah, you missed the first game and only came into the second one because of injury, but you hit the ground running, a stroke-filled 45. Tell us a little bit about that innings and more so your approach when you go out to bat. It's one where, missing the first game and coming into the second one, it's one of, just keeping the head straight, knowing what I'm about, just coming out and give my 100% for the team. So, I'm always ready. Missing that first game, I just kept my head straight and, just be ready to hit the ground running. Yeah, and you guys were 77 for 1, but descended to 101 for 6. Another batting collapse. How do you guys address that in this all-important contest? Yeah, that's been an area of concern, but, there's no real time to, spend too much time on it. We know where we went wrong. We know what we have to do. It's all about just correcting it and guys stepping up, batsmen stepping up and just addressing it and move on. Yeah, treat to watch in that last game. Alzari Joseph 4 for 16. The pace, the control, the Yorkers. From your standpoint, how good was that performance? Oh, that was brilliant. Alzari has been performing for the longest while, and he's still learning. He's still, making strides. So I think we have a very good bowling unit. It's very exciting to watch. So it's all about the batting unit, just giving the bowling unit a very big total to work with. A nice sunshine as you make your way onto the field today. How important is that sunshine and that sun for you guys? Definitely, it's very important because it feels a little bit like Caribbean weather now. So, by the time the game starts, this will be off. And, we're going to have a great time in the sun. Thank you, Johnson. All the best. Thank you. Well, there you have it, acknowledging the fact that the middle order is having a bit of a problem and that they are concerned with that. With that, we're going to take you to Hobart, where we've got Mark Howard and Carlos Braithwaite with the pitch report.
Welcome to Hobart. Picture perfect day here. Wonderful for cricket. Ireland taking on the West Indies. A lot warmer than the last couple of days we've had here. Top of 23 or 24 degrees. A couple of changes in conditions there. You can see the flags up there. The wind was coming from the south. It is now coming from the north-northeast. So the batsmen at the top end will be favoured with a long hit that way. The wind will be behind them. That's an 82-metre hit. But you'll see, this was the pitch a couple of days ago. We've now moved 2 over to the right, 2 over to the east, which makes the boundary on the leg side from the batting at this end a much shorter boundary, 60 metres there. So that end to the leg side is where the bowlers are going to have to protect. Now, here's a treat for you because the big man Carlos Brathwaite is here. Carlos, great to see you. What are you thinking about the deck? As you referenced, with 2 pitches over from the first couple of rounds of games, and as you can see, it's slightly drier behind the crease onto the surface or the playing surface. We can see it is still a little bit drier. It does look a beaut, I would say, with a nice covering of grass, but some cracks tell me that spin will play a big factor today. All right, there you have it. That's how Hobart is looking this morning. Let's talk about the Ireland squad now a little bit, Wasim. For them, you know, they really pulled up a spectacular win against Scotland. Scotland put up 176. Yeah. And they chased it down 180 for the loss of 4 wickets in 19 overs, 1 over to spare. They're looking good right now. Yeah, they are. Obviously, the partnership between Dockrell and Camper was very crucial. शुरू में विकेटें इनकी गिर गई थी, उन दोनों ने आके उस वक्त भी 10 और 12 रन ओवर चाहिए था. उन्होंने नॉर्मल बैटिंग की है, फिर आखिर में आके उन्होंने हिटिंग की है ज़बरदस्त. I think the only worry they have, the main batter Stirling is struggling a bit so far in these 2 games we have seen, and once he clicks, I mean, he's a treat to watch. He's a big hitter, especially in first 6 overs. He can change the complex of the game in matter of overs. And we've got Paul Stirling right now with us. Let's listen in. Paul Stirling alongside me. Paul, a remarkable win in your last game to stun the Scots. How much did you enjoy that, and how were the celebrations? Yeah, it was a brilliant win, wasn't it? One of the best partnerships I've certainly seen with my own eyes by the 2 lads, and just to see the sort of emotions that came out of it. You saw how much it meant to everyone, the travelling support and the players themselves and everyone who was on watching. So brilliant day. Couldn't celebrate for too long because of the timing of it. We're straight back into it today, but we really enjoyed it. We were able to have a couple of beers in the changing rooms. It makes everything ease off, and really delightful day. Your travails at the top of the order in recent times, very well documented. How are you feeling, and what can we expect from you today? Yeah, it's been a tricky couple of months, there's no doubt about that. I think it makes you realise when you are in good form, you know, you really want to make it count. So there's no better day than today to make that form kind of turn on its head, and I think most of it would be forgotten if it did. Indeed, a knockout game. What does it take from you guys to get over the line today? I think just to try and see if we can play our best day's cricket today. I think if we do all 3 disciplines well, I think if we take all our catches, if we bowl well, and see what we can do with the bat, I think that's all you can ask, and we'll give it all our best today and see if we come out on top. And recently you played against most of these guys, and you even played with some of them in the recently concluded CPL. Does that sort of information aid you in your preparation today? I think it helps, certainly, but we know how dangerous the West Indies can be, and if it's their day, you know, they're hard to stop. So hopefully we get ahead of the game and we're able to sort of win it from there, not let them back in, but we'll see how we go when it comes. Yeah, nice sunshine today, Paul. Go well, all the very best. Thanks very much. Cheers. There you have Paul Stirling. Misbah, he's been off colour lately, Paul Stirling, and they were talking about his, you know, form. What do you think is going on with him? I think he's a kind of player जो पहली बॉल से आके अपनी शॉट्स खेलता है. नॉर्मली वो 6 ओवर अगर खेलता है तो वो 6 ओवर्स में गेम को चेंज कर देता है, एंड इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पोजीशन टू देन कम बैक इन द गेम. आपने PSL में भी देखा 6 ओवर में ऑलमोस्ट वो अपना 50 कर लेता है. एट द मोमेंट जब ऐसा प्लेयर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, मिडिल में उतना टाइम नहीं गुजरता, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए स्पेशली. जो जिसका डिफेंस थोड़ा बेहतर होता है वो क्या करता है, प्लेयर ऐसा प्लेयर थोड़ा सा अपने आप को टाइम देता है. इसके पास दूसरी गेम नहीं है, ही हैज़ ओनली वन वे टू गो, आके अटैक करना. उसमें पर समहाउ ही इज़ गेटिंग आउट, ही इज़ नॉट गेटिंग दो स्कोर्स, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. बट ही इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेयर, स्पेशली T20 क्रिकेट हो या वनडे. फर्स्ट 6 ओवर्स आई थिंक इफ़ ही गेट्स गोइंग, और वेस्ट इंडीज़ की मुझे लगता है ये थोड़ी सी जो फास्ट बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग को अच्छा भी खेलता है, सूट भी करती है उसको. आयरलैंड विल बी डेफिनेटली लुकिंग के आज पॉल स्टर्लिंग रन्स करें.
All right, and with that, it's time for another break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. Welcome back from the break. You're watching the Pavilion and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. Group B के आज 2 मैचेस हैं और आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app with me, Shoaib Malik, Misbah Haq and Wasim Akram. अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम पॉल स्टर्लिंग की बात कर रहे थे. But let's not forget how important Phir and Dockrell had been, especially in that last game. Victim की गिर गई थी बहुत सारी, but then they made a great partnership and scored some really good runs. How important is building a partnership, Shoaib, especially when you are confronted with a daunting task like chasing 176? I guess you're batting first or you're batting second. Partnerships are the most important thing in any game, regardless whatever format you're playing. और सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये थी, स्पेशली जो कैंपर है, he played 32 balls, scored 72 runs. तो उन्होंने अपना गेम नहीं चेंज किया, उन्होंने नहीं सोचा कि यार विकेटें गिर गई हुई हैं, I'm gonna go there and I'm going to play my natural game. और जो डॉकरेल हैं, he played 27 balls, scored 39 not out. उन्होंने पूरा हेल्प किया कैंपर को बिकॉज उनके शॉट्स लग रहे थे. तो एक और भी आ गया, मेरा हर एक सीट लगवा लेते हैं. There's a freaking cat in the studio. Cat in the studio. Well, that happens. I mean, you know, we get cats and dogs on the ground as well. क्या मतलब that happens? It happens. Acha, yes, it's very important, especially आपने कहा, they did not change the way they played the game. Now, today, we've seen the pitch report, Misbah, you saw how it is. What do you think, win the toss and do what? I think it's a straightforward decision, especially in Hobart. और pressure game है, you want to bat. और obviously, अगर आप overall results भी देखें, उसमें आपने runs किए हुए हैं. और looks a good pitch from here. और Carlos Westfield ने क्या कि bit of turn, bit of bounce for spinners, finger spinners. Start हुआ है जब तो उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा green था grass. जैसे जैसे वे matches होते जा रहे हैं, prepare हो रही हैं pitches, roll ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो green grass था वो थोड़ा turn होता जा रहा है brown में. It's getting better in terms of that. अगर आप देखें कि pitch almost वही है, थोड़ी सी शायद slow हो जाए. You and your love affair with green grass. और ये 8वां मैच होने जा रहा है जिसमें से 5 मैचेस जो हैं वो टीम जीती है out of 7 जिसने पहले बैटिंग की है. और that has been the data there. Yeah, डॉकरल और कैंपर इस साल के आयरलैंड के बेस्ट बैटर्स भी हैं. एक का स्ट्राइक रेट 144 का है इस साल और एक का है 131 और 35 की एवरेज है डॉकरल की और ऑलमोस्ट 28.5 की एवरेज कैंपर की है. सो दे आर देयर मेन प्लेयर्स. तो जब विकेटें भी उन्होंने गंवाई शुरू में, उसके बाद इन दोनों ने, वजह शोएब ने कहा कि उसने गेम नहीं बदली. उन्होंने ये नहीं सोचा कि गेम को लंबा लेके जाना है, कि हमसे रोकते रहें और अपनी शॉटें खेलते रहें, छोटे चौके वौके मारते रहे हैं, सिंगलें करते रहे हैं, प्रेशर बिल्ड करते रहे हैं हॉलैंड की टीम, स्कॉटलैंड की टीम पे. एंड इन द एंड दे वन द गेम बोथ ऑफ देम. एक बात और मैं करना चाहूँगा यहाँ पे, इट्स अगेन माइंडसेट. आप देखें कि एशिया कप में एक ट्रेंड चल रहा था. Sorry, Mr. We have to cut across to Hobart where Samuel Badri is going out with the 2 captains for a toss. Let's take a look. What does the future have in store for this group and for these 2 teams in particular? Well, let's find out with the coin toss. The captains are here, and so too is a man whose name adorns the stadium here in Bellarive, David Boone. The match referee will oversee proceedings. Who's got the coin? Andy, why don't you give it a toss? Tails is the call. And it is a tail. West Indies has won the toss. Nicholas, for the 3rd time in succession, you've won the toss. What are you going to do first and why? We're going to bat first. Obviously, a fresh pitch as well. There's some sunshine around. We want to put some runs on the board and obviously put enough pressure on Ireland. Yeah, you did what needed to be done in that last game to stay in contention. Another win to stay in the competition. How do you go about getting that result? Again, positive. Coming off some really good momentum as well from the last game. Just to continue doing what we have been doing, but obviously get better and just continue to get better. I think the energy staying together. Obviously we spoke as a batting group, a bowling group, and what we need to do. And today's another opportunity for us to just correct those mistakes. And just with those mistakes and that batting group, what has that discussion been like to address those mistakes?
Obviously the straight boundaries are massive here, and we spoke about hitting the ball in the gap, hitting the ball straight, running hard as possible. Every single run is vital in this game, and we just need to show desperation today. And is Brandon King fit to return into the starting 11? Yeah, Brandon King is fit, so he's in, and Shema Brooks is misses out. Thank you very much, Nicholas. All the very best. Thank you. Andy, if you can make Well, your way here. A remarkable victory in that last game. You must have assimilated that by now, but more so compartmentalize it, because notwithstanding that win, you need another win here today. How do you go about getting that result? Yeah, certainly after losing the first game, it becomes very much win or die. So we did that the other day, got a bit of momentum, and hopefully we can take that into today. And a different surface altogether. What's your initial thoughts on what this one has to offer? Yeah, it looks pretty good. We think it'll stay pretty good for 40 overs. We're going to have to bowl pretty well at the start, restrict them as best we can, and then get chasing later on. And do you change your winning 11? No, same 11. Thank you very much, Andy. Go well, all the very best. And there you have it, folks. The news from out in the middle. West Indies have won the toss, and once again, they've decided to bat first. Well, the news out there is that West Indies have won the toss, and no surprise there, elected to bat. Interestingly, Shoaib, Ireland आज फिर चेस करेगा, और आयरलैंड ने पिछली चेस के अंदर ये दिखाया है कि they have the potential to chase a big total. बिल्कुल, एंड द वे कैंपर एंड डॉक्टरल प्लेड, और वसीम भाई ने बताया भी कि दे हैव बीन स्कोरिंग रन्स फॉर आयरलैंड, और ये है कि दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू हाउ टू चेज अ टारगेट, तो उनके पास वो आइडिया है. सो आई गेस टॉस उनके लिए इतना मैटर नहीं करता, बट येस वेस्ट इंडीज़ के लिए मैटर करता है. उनका जो एक मैं समझ रहा हूँ जो चीज़ मिसिंग है, वो हमेशा से जो 2 वर्ल्ड T20s भी वो जीते थे, उसमें मार्लन सैमुअल्स थे, एंड डैरन सेमी he had given the role to Marlon Samuels to play the whole 20 overs by rotating the strike. और बाकी के जो बैट्समैन थे वो अपने शॉट्स खेलते थे, बड़े शॉट्स खेलते थे, रन बनाते थे. यहाँ पे they have given the same role to Hitmeyer, जिसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी थी, और वो अब जो है वो हिस्सा नहीं है टीम का, तो that's why they are struggling when it comes down to middle. And last time I saw him, he's a very good talent actually, treat to watch, very good batter. He's put on bit of weight as well. मैंने IPL में देखा था. I can understand. आप पता है कि फ्यूचर में तुम यंग हो, तुमने आगे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, आगे इनके लिए अदर लीग्स भी हैं. So I don't know how does their mind work sometimes. Let's take a look at the playing 11s now, and let's see how these playing 11s are set up. And Misbah, you can take us through the first playing 11 coming up on your screen. West Indies here. Yeah, Myers, Charles, Lewis. I think फिर batting order मुझे लगता नहीं कि change करेंगे. They will go with the same top order. King वापस आए हैं, पिछले मैच मिस किया था उन्होंने. पूरन, पाल, होल्डर. And obviously they got only one spin option. Hussain bowling well. Smith, our rounders उसी तरह Joseph ज़बरदस्त bowling कर रहे हैं, and then McCoy. Right. So it's overall, if you look at, I mean they've been just playing the same team. एक को उन्होंने change की थी last game में, that was because of the injury. And you, Shoaib, take us through the Irish team. Sterling है, they depend a lot on him. फिर कैंपर, डॉकरल, ये एक ऐसे हैं, साथ में दोनों ऑलराउंडर्स हैं. और स्पेशली जो कैंपर है, उन्होंने लास्ट मैच में जो है उनका स्पेल भी बहुत अच्छा था. उन्होंने 2 विकेटें ली थी 9 रन्स दे के. और अडायर के भी एनालिसिस बहुत अच्छे चल रहे हैं. लास्ट मैच में उन्होंने 1 आउट किया था 23 रन्स दे के. तो ओवरऑल देखें तो कोई चेंज नहीं की इन्होंने, एंड दे आर गोइंग विद अ विनिंग कॉम्बिनेशन, और बिग गेम फॉर देम. Totally, very, very important. Now both teams want to win and get going into the next round. क्योंकि आज के एंड पे, डे के एंड पे, या तो वो टीमें जिन्होंने 4-4 पॉइंट लिए हैं वो आगे चली जाएंगी, या फिर जो बारिश वाले सिनेरियोज हमने आपको बताया. मिस भाई, you wanted to add something? I think both teams, जो जैसे कहते हैं ना कि they got their wish. West Indies wanted to bat first because उनकी बॉलिंग अच्छा कर रही है, runs on the board, जबकि मुझे लगता है Ireland will be happy कि वो दे आर चेजिंग. उनकी बॉलिंग उस तरह नहीं है कि वो डिफेंड कर सके टारगेट. सही. मेनली वो चेज करना पसंद करते हैं. उनकी बैटिंग थोड़ी सी उस पर ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं. तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग, स्पेशली आफ्टर चेजिंग इन द लास्ट गेम. कोशिश करेंगे वो कहीं अगर 150 या उससे नीचे तक वेस्ट इंडीज़ को वो रोक सकें, एंड देन दे हैव a chance to chase. So interesting game.
Interesting game. And with that, we're going to take an interesting break right here in the Pavilion. Keep watching A Sports 10 Sports and the ARY Zap app. See you on the other side of the break. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. और हम बात कर रहे हैं Group B की of the qualifiers of the men's ICC Men's T20 World Cup from Australia. आज होबार्ट में वेस्ट इंडीज टॉस जीत चुकी है आयरलैंड के खिलाफ और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। जरा नजर डालते हैं आज के दूसरे मैच पे। आज जो दूसरा मैच आपका होना है वो है स्कॉटलैंड बा मुकाबला जिम्बाब्वे। ये दूसरा मैच है। ये दोनों टीमें भी याद रहे कि पहला मैच अगर पूरा होता है तो उसमें से जो भी जीतता है वो अगले राउंड में चला जाता है। यहाँ भी दूसरे मैच में भी जो जीतता है वो अगले में चला जाता है। बिकॉज 4 points is all they need to move forward. However, rain can play a spoiler here and things can be a little different. But that's just the way it is. Now Scotland Zimbabwe 2016 में आखिरी दफ़ा ये लोग मिले थे ICC Men's T20 World Cup के अंदर और जिम्बाब्वे ने वो मैच जो था वो जीता था 11 रन के साथ। So we're hoping that they turn out to be really good. Scotland मिसबा आपने लास्ट मैच में 176 रन उन्होंने टारगेट दिया था आयरलैंड को। They did really well. They played very well and especially John's की जो इनिंग थी I think that was master class. वो जो हम कह रहे थे ना कि बैटिंग में उनके उस तरीके से अभी वो तीसरा मैच था उनका। आई थिंक जो जिस तरह की शॉट्स खेली और जो इम्पोर्टेंट वो स्टेज थी विकेटें गिरी हुई थी बट ही जस्ट कंटिन्यूड और ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मैच को ऐसी स्टेज पे वो ले गए। मुझे लगता है बड़ा हम देख रहे थे दोनों मैच तो रियली इंजॉयड द इनिंग और रेंज ऑफ शॉट्स जो थी। So he will be a key player for them also, and I think the way they played the game, बड़ा दोनों की जो अगर टीमें देखें थोड़ा सा एक चैलेंज ज़रूर होगा स्कॉटलैंड के लिए टू प्ले अगेंस्ट द स्पिनर्स। सिकंदर रज़ा जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर विलियम्स ने जिस तरह बॉल किए वो देखना है कि स्कॉटलैंड कैसे उसको टैकल करता है। बट ऑब्वियसली टीम्स ठीक हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जिम्बाब्वे का स्ट्रॉन्ग है बट ओवरऑल स्कॉटलैंड की टीम जिस तरह खेल रही है इट विल बी आल्सो बी अ गुड गेम। All right, and with that, go ahead, Wasim. No, go ahead, please. No, I think the X factor for Zimbabwe definitely has been in this series Sikandar Raza. Yes. With his batting, with his bowling, we all know he's a gun fielder. And, he scored 612 runs with averaging 40 and strike rate of 154. And that's consistency is the name of the game for him. So he's a game changer for Zimbabwe today. Absolutely, no question about it. And with that, it's time for the expert predictions brought to you by Olivia. Okay, an expert prediction time. Let's go to the Japani Tota first. Shoaib Malik, किधर है आपका जापानी तोता? ये किसने नाम वैसे कैसे दिया था जापानी तोता? खुद ही शेब भी देता। खुद ही शेब Japanese तोता। Japanese तोता। Right, जनाब। पहले मैच की क्या prediction है आपकी? West Indies and Zimbabwe. West Indies and Zimbabwe. मिसबा आपकी? पुट्ठी गाल करेगा। सेम। सीधी बात कर गुड बॉय। फाइनल मिलवाया तो हाँ सेम वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे बनता ही है देखा जाए तो सिनेरियो। स्कॉटलैंड आई थिंक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डाउन भी होंगे वो हार के बाद। राइट, जो हारे हैं अभी मैच पिछला आयरलैंड से ये थोड़ा गिरे भी होंगे। सो बड़ा जरूरी है कि अपने आप को उठा के रखें। विकी भाई से भी पूछ लो। वकार भाई का मैं कर लेता हूँ। वकार भाई के लिए मैं कर देता हूँ। वकार इज नॉट हियर बट वकार के लिए आई थिंक आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे। आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे। चांस लेना तो पूरा लेना। अरे वाह 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 वाह, चांस से। एंड देयर आर योर एक्सपर्ट प्रेडिक्शन। Okay, so there you have it. The two games all set, loaded, ready to go. West Indies batting first. Should be an interesting start to the day. And then, of course, Scotland and Zimbabwe game. Scotland-Zimbabwe के मैच के अंदर अभी जिस तरह वसीम भी बोल रहे थे और मिसबा भी बोल रहे थे, दोनों बड़ी इवनली पॉइज्ड टीम्स हैं। लेकिन समथिंग इज गोइंग ऑन इन द स्कॉटलैंड कैंप दैट इज गिविंग देम दैट एक्स्ट्रा एज राइट नाउ। देयर इज सम कॉन्फिडेंस देयर। पिछला मैच वो हारे लेकिन 176 रन उन्होंने किए पहले। अभी क्या अप्रोच होगी उनकी जिम्बाब्वे, क्योंकि जिम्बाब्वे इज ऑल्सो प्लेइंग रियली वेल। जिम्बाब्वे का सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनके जो बैटर्स हैं दे आर नॉट कंसिस्टेंट। अगर हम सिर्फ सिकंदर रज़ा की बात करें जैसे वसीम भाई ने किया, ही इज़ बीन
कंसिस्टेंट और बट वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, उनको भी अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो वो ज़्यादा डेंजरस होंगे। लेकिन अच्छी चीज़ वो ये कर रहे हैं कि वो अपना गेम नहीं चेंज करते, चाहे ऊपर से उनको अच्छा स्टार्ट मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। अब अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की बॉलिंग की तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नॉट जस्ट देयर स्पिनर्स, इवन जो ब्लेसिंग मुजर रब्बानी है उनको बाउंस मिलता है और जिन कंडीशंस में खेल रहे हैं वो डेंजरस होंगे और वो आउट कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिम्बाब्वे के पास जो है वो ज़्यादा एज है एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड। Right, gentlemen, thank you very much and hope that you guys get some rest because we've got to come back later in the day after the 2 games. Best of luck to West Indies and Scotland and Zimbabwe and Ireland. May the best team win, and we'll be back with our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup right here on the Pavilion. You're watching us on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. और इसके साथ ही आपके ऑमलेट 25 ये बात की ना, देख शोएब ने ये बात की नहीं, मेरे ऑमलेट और वो मिसबा के पाए डाइट वाला नाश्ता कर रहे हैं आजकल लोग बहुत। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मैंने देखा ये देखने वाले हैं ना, उनका बेड़ा गर्क करेंगे ये इसी तरह। Wasim, I know, has very healthy breakfast. He's like, you know, okay, I'm just going to have salad and tomatoes and this and the other. Like that, yeah. You're always very, very good, man. you're a hero. Advice करें ना, अच्छा एडवाइस करें आप, एक्चुअली मुझे शो खत्म करें दें फिर उसके बाद एडवाइस कीजिएगा। We'll start the games. Keep watching our Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app.